ऑटो शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट मुग्धा मिश्रा। स्कोडा इंडिया ने कोडियाक का फेस लिफ्ट लॉन्च किया है और इस बार कोडियाक इंडिया में असेंबल हो रही है। अनिर्बान मित्रा ला रहे हैं आपके लिए इसका एक डिटेल्ड रिव्यू। In my books, the Kodiaq always looked proportionate yet very simple and elegant lines. Same is with the second generation model. However, there's a difference. If you take a closer look at the grille, there is a light strip that runs right across. It's illuminated, especially at night, you can have a proper distinction. Now, what stands out as a typical Kodiaq feature on the design front are these power bulges on the bonnet, and they are untouched. The matrix LED light, they look sharp, and also the elements here, they pop out nicely at night. The air dams are vertically stacked. The face largely looks similar. However, there are certain angular changes that are kind of nip and tucks to this design. There are 6 color ways to choose from, and there are 2 variants. The LNK, the top of the line LNK variant, and then there is also a Sportline variant, which is more of blacked out elements throughout. Now, this family SUV runs almost 4.8 meter in length, so there is no dearth of road presence. Now, these 18-inch alloy wheels, the design is new. However, I don't like it all that much because there's black plastic used in the middle, and the wheels on the Sportline variant, they appeal to me far better. The ground clearance is under 160 millimeter, so extreme tall breaker, there are chances of scraping the underbelly. The side profile looks largely similar, but then there is change in drag coefficient, which has improved remarkably over the previous Kodiaq. It's a squat stance at the rear, and it's distinct from the previous Kodiaq. You have a bold Skoda lettering on the electric tailgate. You open it, there is a full-size space saver, and the boot space with all 3 rows up is 281 liters. There has been optimization over the previous Kodiaq. If you fold the 3rd row, the cargo volume expands to almost 800 liters, and I think that is good enough for your family for the weekend. The tailgate design has been changed quite a bit. New Skoda lettering. The lights are also new, and there is an element of light bar that connects from end to end. While the changes in the exterior design were very conservative, designers have gone all out to make the cabin look fresh, fervent, and full of features. Right up front is this new 13-inch display. Comes with a host of features. What I also like is this AC control here. These rotary dials, these have got really cool graphics, and paired to that, this tactile feedback is also very good. And also right in the middle is the drive mode selector. You have 7 drive modes to choose from, and also if you press it, it can play through the wind speed and also the music settings. Front seats, you can enjoy dual zone AC. Coming to the dashboard layout, now see, this is quite revolutionary, quite a big departure from the previous Kodiaq, and let me break it down step by step. See, on top of the dash, it's really soft touch material. I kind of like it. Also, in the middle, this X or cross stitching throughout gives it a distinct appeal. There are 2 compartments for the glove box. The lower half is not very deep, but quite usable. And then this portion also opens up, gives you some amount of space to keep your knickknacks. Much like Skoda Sense, you can move around this top box, which doubles up the number of cubby holes here. The amount of space on offer in the front row seats is quite generous, whether the door bins or this central deep armrest. You have plenty of space to keep small things here and there. Coming to the seats, these are electrically adjustable seats. Both of them, they come with heating and cooling functionality, and there is massage feature with a LNK variant as well. In terms of support, however, I feel the lateral bolstering could have been slightly better,
but the seats are quite big, spacious, and the party trick, I believe, is the extra amount of thigh support that you get whether you're driving the car or as a co-passenger. The new 2-spoke steering wheel with this bold Skoda lettering. This is a new unit, feels grippy, good finish, knurled buttons for volume controls, and overall the feedback on the wheel is quite pleasant. Now it's adjustable for both reach and rake. The previous Kodiaq also had a fully digital driver display, but that has been given an overhaul as well. It's also a new gear stock now. Previously it used to be hosted in the central compartment. Now it has been moved to a portion behind the wheel. I do not like it all that much, but it's a new addition altogether. Right to the middle, this ambient lighting uplifts the overall mood. Of the many design changes inside the cabin, the door handle has also been redesigned, and I kind of like it, but you know, over the years it might just feel a little flimsy. But then the layout here has also been reworked comprehensively. And now the AC vent design is also quite new. It's boomerang shaped, busy for my liking, but then kind of seamlessly integrates with this too many cuts and creases as you go along. A full-size panoramic sunroof, also a nifty feature. See, all the windows in this car come with one-touch functionality. There are plenty of hits in the cabin, but what is a low here is the third row seat. Just like before, it's not much usable. Now the Kodiaq uses that same MQB Evo platform, which underpins plenty of other Volkswagen Skoda cars, including the Tiguan Allspace and the Audi Q5. And here, the wheelbase stands at 2791 millimeters. If you are using for family of 5, the space on offer is more than satisfactory for chauffeur-driven audience. My height for perspective is 5'8", no problem whatsoever with the headroom, legroom, or even the amount of area to move around my feet. I am seated in a very comfortable and spacious position. If I have a gripe, well, I expect a little bit better under thigh support. And then this space is best suited for 2, because though there is this parcel tray which you can take off completely, but still the hump is quite intrusive and the person sitting in the middle will not find it comfortable. 3 adjustable headrests, and there is an armrest with a couple of cup holders. Now, much like the previous Kodiaq, you have blinds for privacy and cutting down harsh sunlight. There has been change in the material used to design this cabin, but lack of soft touch material on the door trims I find a little undercooked. I think there could have been panels specially for Indian condition which could have been more plush to touch. In terms of feature, you have 750 watt Canton speakers, really good quality, 3-zone AC, which means rear passengers can enjoy their own set of cooling. Apart from that, there are a couple of C-type USB charging port, and then you have entertainment suite. I mean, there's a holder where you can put your phone or tablet and enjoy entertainment on the go. At the heart of the matter is a 2-liter petrol engine. It is the same engine that we saw with other Skoda Volkswagen cars, but it's slightly retuned. The power bump is there. It makes 201 horsepower and 320 Newton meters of peak torque. This engine is mated to a 7-speed dual clutch gearbox. The engine is very smooth, feels refined, and gentle dab on the accelerator. This one takes off with quite a bit of urgency. There are multiple drive modes to play with, and if you are in the sport mode and if you take controls using these paddle shifters, you would really love the spirited driving performance this huge D-size SUV has to offer. The company claimed mileage figures are under 15 kilometers to a liter of petrol, but in real life expect that to drop down to single digits. On the highways, however, this one should return around 12 to 13 kilometers to a liter. The view from the driving seat is quite good. It's a wide, commanding view. However, the thickness of A-pillar is slightly obtrusive, especially when I have to take a
tight U-turn or driving it through tight confinements can be a little bothering. However, what may help you is the 360-degree camera, which is improvement in this car now, and overall the camera quality is good. I drove the car on the Atal Setu as well as I steamed out of Mumbai towards Navi Mumbai and Panvel, and at triple digit speeds this one feels quite relaxed, composed on the highways, and you would actually enjoy it if you are traveling with your friends and family. The ride quality is slightly on the stiffer side, and that has always been the case with Kodiaq. You do feel the rough edges creeping into the cabin, making it a little jarring if you compare it to other Indian make SUVs. The suspension is slightly on the stiffer side. The handling is decent for the size of SUV that the Kodiaq is. There's a little bit of vagueness right in the middle. However, if you're driving it spiritedly, you would love the response at the wheel. There's fair bit of body roll if you are taking swift turns around corners, and I hope for better cushioning that could have kept your composure a little better. The braking performance is confidence inspiring. The brakes are quite sharp and the feedback on the lever is satisfactory. The NVH levels in this car are also very pleasing. These glasses, they kind of cut down the extra noise from the traffic to a huge extent, and I think it kind of improves your feeling when you are cruising on the highways. I'm happy to report Skoda is planning plenty of things with Kodiaq. It's just not this petrol with a 4x4, but multiple derivatives of Kodiaq that will follow and enter with due course of time. That includes diesel, that also includes an affordable front wheel drive, and also a more powerful Kodiaq in the offering. It has always been a very safe SUV, gets host of electronic features. The ADAS is not there, it's kind of a hygiene in the segment, but then Skoda says certain calibration for Indian market is in process. So maybe few months down the line, Skoda will introduce ADAS functionality for the Kodiaq owners. But then there are 9 airbags as standard, much like before, but then the position of the 9th airbag has changed. Previously, it was a knee airbag for the rear passengers that has been removed, and now you get a central airbag that helps the driver and co-passenger in case of an eventuality. देश का सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज चैनल NDTV इंडिया देखिए डीडी फ्री डिश चैनल नंबर 55 पर। Beyond better, the new Tiguan R-Line. Volkswagen. Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. Cultivating and strengthening your vision allows you to achieve the future you have always imagined. We open up a world of opportunities for you with our truly innovative methodologies, advanced tech-enabled infrastructure, and experiential learning. Give wings to your aspirations at KR Mangalam University. शंभो, मेरी वाली कॉफी देना। ये मेरा साला मेरा घर सेट कराने आया था। शंभो, रिमोट। ये बैठ के ऑर्डर देता है, खुद कुछ नहीं करता। इससे बेटर तो मेरा वोल्टा स्मार्ट एयर एसी, ये सुपर साइलेंट चलता और इसका मल्टी एडजस्टेबल मोड जरूरत के हिसाब से कूलिंग करता। सो स्मार्ट, शोर कम, काम ज्यादा। अगरवाल पैकर्स एंड मूवर्स बड़े भैया DRS ग्रुप एप्रिलला सुशीला सुजी बघायला विसरू नका। पापा यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक।
इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। द NDTV ऑटो शो में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। एक वक्त था जब भारतीय बाजार में काले रंग की गाड़ियां लॉन्च ही नहीं होती थी और अब ट्रेंड बिल्कुल बदल चुका है। काले रंग की गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं और उनको सेलिब्रेट भी किया जा रहा है ब्लैक एडिशन नाम देकर। और इसी ट्रेंड को फॉलो किया सिट्रोएन ने। उन्होंने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का ब्लैक एडिशन उतार दिया है। अमूल्य श्रीनेत ला रहे हैं आपके लिए सारी डिटेल्स। So let's start with the basic, talking about the design of the most affordable car of the Dark Edition range, the C3। इसमें जैसा कि आप देख सकते हो हमें पर्ल एंड एरा ब्लैक पेंट मिल जाता है। उसके साथ साथ ब्रांड ऑफर कर रहा है स्लाइटली डार्क एंड क्रोम लोगोज। ऑल ब्लैक लुक के साथ हमें सिल्वर स्केट प्लेट मिलती है विच स्टैंड्स आउट एंड लुक्स डिसेंटली नाइस। ऑन द साइड्स वी गेट द डार्क एडिशन बैज जो कि हल्के से डार्क किए गए हैं। साथ ही साथ ब्रांड साइड में प्लास्टिक क्लैडिंग्स ऑफर करता है विच आर पार्ट ऑफ एन एक्सेसरी पैकेज एंड नॉट द डार्क एडिशन। इसके साथ साथ इसमें एक छोटा सा क्रोम एलिमेंट है विच शाइन्स एंड स्टैंड्स आउट अलॉट, जो कि काफ़ी अच्छा दिखता है। सिमिलरली रियर एंड पे भी हमें एक डार्क एडिशन बैज मिलता है। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट द कार ऑफर्स ऑन द इनसाइड। जैसा कि आप ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे होगे, एवरीथिंग इन द केबिन इज डार्क। स्टार्टिंग विद द स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पे आपको लेदरेट कवर्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको डैशबोर्ड पे लेदरेट एलिमेंट्स मिल जाते हैं विच आर सॉफ्ट टच एलिमेंट्स विच ऑलवेज कंटिन्यू ऑन द डोर। इसके साथ साथ आपको रेड स्टिचिंग मिलती है विच मेक्स इट लुक प्रीमियम। नाउ यू गेट एम्बिएंट लाइटिंग, फुटवेल लाइटिंग, पियानो ब्लैक एलिमेंट्स ऑन द AC वेंट्स। आपको सीट पे लेदरेट कवर्स मिल जाते हैं। उसके साथ साथ ब्लैक कलर का गियर नॉब। All of these elements are part of the Dark Edition theme and they all make the car look premium. Now you get folding ORVMs। इसके साथ साथ आपको रियर पावर विंडोज़ भी मिलते हैं और फ्लिप की। इसके साथ साथ अब सारी गाड़ियाँ E20 फ्यूल कंप्लाइंट हैं। विद ऑल ऑफ दिस द डार्क एडिशन कम्स एट 8.38 लाख और इसका हाईएस्ट वेरिएंट 10.19 लाख पे है। इसके साथ साथ पावर ट्रेन ऑप्शंस की बात करें तो आपको नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो पेट्रोल दोनों ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें टर्बो पेट्रोल के साथ साथ आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों मिल जाएगा। That was all about the C3. Now get to the next car. Now let's talk about the details of the Aircross. इसमें जैसा कि आप देख सकते हो अगेन द पर्ल एंड एरा ब्लैक पेंट कंटिन्यूज। उसके साथ साथ अब आपको इसमें ज़्यादा डार्क लोगोज मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें ब्रांड ने बहुत ज़्यादा पियानो ब्लैक एलिमेंट्स का यूज़ किया ऑन द फ्रंट एंड। द सिल्वर स्केट प्लेट इज स्टिल देयर एंड ऑन द साइड यू स्टिल गेट द डार्क एडिशन बैजेस जो कि हल्के से डार्क क्रोम के साथ आते हैं। आगे की तरह ही कार के रियर एंड में भी हमें बहुत रिफ्रेश्ड एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाउ यू गेट अ ग्लॉसी ब्लैक एलिमेंट प्लेस्ड राइट अबव द बैज। उसके साथ साथ आपको एयर क्रॉस लेटरिंग मिलती है जो कि थोड़ा वाइड स्प्रेड है एंड मेक्स द कार लुक्स नाइस। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट्स इनसाइड द कार। जैसा कि हमने C3 में ऑलरेडी देखा है, एयर क्रॉस पे भी ऑल ब्लैक केबिन मिलता है विद लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील। इसके साथ साथ हमें सॉफ्ट टच एलिमेंट्स मिल जाते हैं ऑन द डोर्स, ऑन द डैशबोर्ड विद लावा रेड स्टिचिंग। इसमें अनलाइक C3 पूरी लेदरेट सीट्स हैं जिसमें आपको डार्क एडिशन बैज भी मिलता है और लावा रेड स्टिचिंग भी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल नाउ यू गेट एम्बिएंट लाइटिंग एंड फुटवेल लाइटिंग। साथ ही साथ यू कैन सी ग्लॉसी ब्लैक एलिमेंट्स अराउंड द AC वेंट्स, ऑन द गियर नॉब एंड ऑन द आर्मरेस्ट। इसके साथ साथ एक फीचर जो बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करता है वो है द प्रेजेंस ऑफ सिट्रोएन बैज ऑन द डोर सिल्स, फोल्डिंग ORVMs और सेंटर लॉकिंग सिस्टम। जहाँ तक पावर ट्रेन की बात करें तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आया। आपको अभी भी वही टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा विद मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। द मैनुअल वर्जन इज प्राइस्ड एट 13.13 लाख, वहीं पे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का प्राइस है 14.27 लाख फॉर द एयरक्रॉस। नाउ लेट्स सी द डिटेल्स ऑफ द बसॉल्ट। Since we have already seen the C3 and the Aircross, so I won't get into repeating the same things like black paint and the dark edition badges. Now you get chrome embellishments on the front grille, जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ प्रेजेंट हैं, which were not on the Aircross or the C3. इसके साथ साथ आपको एक रेड स्ट्रिप मिल जाती है ऑन द फ्रंट एंड एंड द साइड, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टैंड आउट करती है और सिमिलर है बहुत ज़्यादा इस ब्रांड की यूरोपियन कार्स से। जस्ट लाइक द एक्सटीरियर्स, बसॉल्ट के इंटीरियर में भी एयरक्रॉस से बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज। यू गेट द लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, द डैशबोर्ड, द लेदरेट सीट्स विद डार्क एडिशन बैजेस, द एम्बिएंट लाइटिंग, द फुटवेल लाइटिंग, द डोर सिल्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। साथ ही साथ इसमें भी आपको फीचर अपग्रेड्स मिलते हैं जो स्टैंडर्ड वर्जन में भी देखने के लिए मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल नाउ यू गेट रियर पावर विंडोज़, द फोल्डिंग ORVMs एंड द सेंटर लॉकिंग सिस्टम। सो कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, बट विद द बसॉल्ट दीज थिंग्स फील प्रीमियम। बसॉल्ट की भी पावर ट्रेन में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। यू गेट द सेम टर्बो पेट्रोल इंजन विद मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। मैनुअल इज प्राइस्ड एट 12.80 लाख, वहीं पे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इज अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव एट 14.10 लाख।
आई होप आपको आज का शो पसंद आया। अगर ऐसा ही इंटरेस्टिंग ऑटो रिलेटेड कंटेंट आपको लगातार देखना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे YouTube चैनल NDTV ऑटो पर। उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सारे अपलोड्स की जानकारी आप तक पहुंचे तुरंत। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।